Good morning, everyone. Welcome to Beyond Fine Prints. So, today we are going to discuss the Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024. So, now it has been amended. Earlier it was 2024. Now it has been amended and came into force on 1st of August 2026. So, now it is the result of the protest which happened worldwide. Of course, the Indians outside India were also protesting, and in India, there were protests everywhere, as everyone knows. So let's discuss about this act. What were the changes that it has brought, and अभी से क्या डिफरेंस है इसमें, पहले में क्या था और अभी में क्या है ओल्ड एंड न्यू एक्ट में. सो लेट्स फाइंड आउट. सो पहले बेसिकली सो इट इज़ टू पनिश, और ये जो चीटिंग फ्रॉड केसेस होते हैं उनको रोकने के लिए एक्ट बनाई है. सो बेसिकली इट कवर्स व्हाट ऑल थिंग्स. सो इट कवर्स यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीटीए, सॉरी आईबीपीएस. सो बड़े सारे ये जो गवर्नमेंट ये एग्जाम्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स एंड अदर नोटिफाइड पब्लिक एग्जामिनेशंस, ये सारी चीज़ें ये कवर करेगा. ठीक है, ये तो था हमारे पुराने इसमें. सो नाउ नए में भी इट कॉन्टिन्यूज द सेम कवरेज, बट इसमें आपका जो पनिशमेंट है और जो फाइन्स है दैट हैज़ बिन मॉडिफाइड एंड प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म हैज़ बिन मॉडिफाइड. सो अभी भी काफ़ी सारे गैप्स हैं एक्ट में, but yes, there are some changes which has been introduced. So now let's see. So here I'll tell you what all has been changed. So the use of unfair means by a person, कोई individual person करता है. So earlier there were, the imprisonment was between 3 to 5 years with a fine up to 10 lakh. So now the imprisonment has been increased to 5 to 10 years with a fine up to 50 lakhs. And if the unfair means or the accused is the service provider, so the fine has been increased up to one. Earlier it was 1 crores. Now the fine has been increased up to 5 crores. If the person in charge of a service provider involved in unfair means, so then the imprisonment is, earlier it was 3 to 10 years with a fine of 1 crore rupees. So now it has been increased to 5 years and fine up to 5 crore rupees. So, and in case of organized crimes, so imprisonment between 5 to 10 years and fine not less than 1 crore if it is an organized crime. ये earlier था. So now it has been amended and changed to minimum imprisonment increased up to 7 years with a fine, the minimum fine increased up to 10 crores. So the accused, if the accused is a service provider, so अब इनका so now that particular service provider will be barred from conducting any public examination for up to 8 years. Earlier it was 4 years. Now the debarment has increased up to 8 years. So the special task force will also be formed to investigate the cheating fraud cases, and the investigation needs to be completed within 2 months. तो सारी यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स को डायरेक्शन दी गई है कि जो सेशन कोर्ट होगी दैट विल बी डेजिग्नेटेड एज अ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू लुक इनटू ऑल सच चीटिंग फ्रॉड केसेस. अब जो पेंडिंग जो केसेस हैं दैट विल आल्सो बी ट्रांसफर टू दीज कोर्ट्स, एंड द टाइमलाइन आपकी है, ट्रायल की टाइमलाइन है आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस. द टाइमलाइन इज 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्ज शीट. अब जो ट्रांसफ़र केसेस हुए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र, द टाइमलाइन इज 3 months. अब इसके आगे if any aggrieved person, they can appeal to high court, to the concerned high court, jurisdiction high court. And अगर हाई कोर्ट में आपने अपील करी है, so इसका टाइमलाइन है 3 months from the date of admission. The appeals must be filed within the 30 days of the order. It is also stipulated that no appeal may be entertained after 90 days. And so this is the final resort.